Today we have discussed sector, area of sector. This question on the screen in figure given that sector OAP of a circle with center O containing angle theta. AB is perpendicular to the radius AO and meet AB perpendicular to radius AO and meet OP produced at B. Prove that the perimeter of shaded region here APV, इस रीजन का आपको पेरीमीटर निकालना है. एवरीवन क्लियर? R ब्रैकेट tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस पाई थीटा बाई 180 माइनस 1. So first of all, using the find out the distance of AB. AB डिस्टेंस को हम फाइंड आउट करेंगे एंड डिस्टेंस ऑफ PA एंड डिस्टेंस ऑफ PB फाइंड करके उसके लेंथ को ऐड कर देंगे तो उसका पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा. तो यूजिंग द फॉर्मूला हियर AB tangent line, AO is radius. So therefore solution of this question in triangle OAB, angle A is equal to 90. Using the formula sec theta. Sec theta is equal to, using the formula sec theta is equal to how? Sec theta is equal to hypotenuse upon base. Hypotenuse in right angle triangle, this angle is 90 degree. Hypotenuse will be OB. OB upon OA. Sec theta is equal to OB, distance find करेंगे, find it here, will be find OB distance and AO is R, so therefore OB is equal to, this be cross multiply R sec theta. Everyone clear? OB distance find and find out the distance of A. Using the formula, tan theta is equal to perpendicular upon base. Perpendicular will be AB, upon base will be AO. Tan theta is equal to AB, find
ए बी विल बी फाइंड, ए बी फाइंड करना है, ए ओ इज गिवन दैट आर, सो देयर फोर ए बी इज इक्वल टू आर tan थीटा. Everyone clear? Next, ए बी इज इक्वल टू, ए बी को मैंने फाइंड कर लिया. अब क्या करेंगे, फिर आते हैं नेक्स्ट पेज पे. यहाँ पे आपको प्रीवियस पेज पे आते हैं. ए बी को फाइंड कर लिया, ओ बी को फाइंड कर लिया. अब हमें इस डिस्टेंस को निकालना होगा, इस डिस्टेंस को, या इस डिस्टेंस को निकाल लीजिए पहले. किस डिस्टेंस को निकालेंगे, पीबी को. पीबी डिस्टेंस को फाइंड करते हैं. पीबी इज इक्वल टू, पीबी इज इक्वल टू क्या होगा, पीबी इज इक्वल टू ओ बी माइनस, पीबी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ बी माइनस ओपी, ओपी, ओपी. Here OB r sec theta, OP this value is r, so this value is also r equal to the radius. OB is finded here r sec theta and OP is equal to the radius AO, so therefore OP is also r. R sec theta, this distance OB, minus R. OP is equal to radius. Everyone clear? In previous diagram AB is finded here R tan theta. Now we have find this distance PA. PA will be length of sector using the formula length of sector. Here PA is length of sector, so will be using the sector formula. Now therefore bisector formula, bisector formula, length of L is equal to theta upon 180 pi r. प्रीवियस पेज पे चलते हैं. तो दिस इज द PA is length of sector. PA is length of sector, so therefore the value of PA is equal to theta upon 180 pi r. So therefore perimeter, we have perimeter of shaded region will be PA, PB, AB. PA perimeter of shaded region is equal to PA, PB plus PA this distance, PB this distance, plus AB.
P is find it here. PA theta upon 180 pi r plus PB here find it r sec theta minus r plus AB. AB is what? AB is find it here r tan theta plus r tan theta. Now therefore r is common each terms, so what will be? R is common in each term, so therefore this will be theta pi upon 180. Theta pi upon 180. Theta, the value of theta is given. Yes or no? The value of theta is not given. Theta pi upon 180. You are clear? Plus sec theta plus tan theta and r cancel minus 1. It's proved. It's proved. Everyone clear? Yes or no? So very simple question. These questions are previous years बोर्ड्स में आ चुका है और इस बार इस क्वेश्चन को आने की संभावना बहुत ज़्यादा है. तो सभी स्टूडेंट्स से kindly request all the students revise this question properly. Thank you. Everyone have a nice day.